Hello, dear students. This is me, Onkar Verma, lecturer in English from Diet Chamba. And today in this session, we will discuss about the importance of language-rich classroom. As you all know, that language is a matter of speaking. It means to say that language is a medium or a mean through which we express our thoughts, ideas, and feelings to the other, and also listen the thoughts and ideas of the other person. So it is important to have efficiency in the particular language in which we are speaking. If someone is speaking or someone is saying something in a particular language and that language is not familiar to the listener, mean to say, if the listener is not conversant with the particular language in which the speaker is speaking, then there will be no understanding. So, in order to understand the ideas and thoughts or the statements given by the speaker, it is necessary to for the listen to have efficiency or you can say familiarity in that particular language. So both the speaker and listener should be efficient in a particular language in which they want to conversate. So in context to the learning of the language in the school, लैंग्वेज लर्निंग जहाँ तक बच्चे के साथ जो है वो इसका संबंध है, तो हमने बच्चे को लैंग्वेज किस तरह से इनिशिएट करनी है। कोई भी लैंग्वेज बच्चे को जब सिखानी है तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, चाहे ओरली या रिटन वे में। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को हमने लैंग्वेज जो है वो पढ़ानी नहीं है, हमें उसे लैंग्वेज सिखानी है। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज मीन्स नॉट टू टीच द characteristics of the language, not to teach the different components of the language, or not to make the students to memorize the different things given in that particular language, but our main objective should be to make the students able to express themselves in that particular language in the different situations. The student can be able to express himself. तो भाषा को सिखाने का मतलब ये है कि हमें बच्चे को उस भाषा में अपने आप को किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस करना है, किस तरह से दूसरे जो है वो व्यक्ति के साथ कन्वर्सेट करना है, इंटरेक्ट करना है। ये चीज़ जब तक उस भाषा में बच्चे को नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो भाषा जानता है। सो इन कंटेक्स्ट टू द लर्निंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलरली, here I just want to say here that in today's education system, where the English language is introduced in our school system, since
from the beginning, when a child enters in the school, whether in first standard or in nursery standard, in government schools, English is introduced in first standard. So, in our so-called education system, जब हम बच्चे को इस फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें ये पता है कि बच्चे ने उससे पहले जो है वो अपनी मदर टंग सीखी है। वो हिंदी बोलना और पढ़ना नहीं जानता होगा, बट बोल सकता है, समझ सकता है, लिख नहीं सकता है, बट वो मदर टंग में और हिंदी में बात कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो एट दिस स्टेज we just have to initiate the learning of a foreign language, and that is English. So at this stage, the languages the child has already learned, his mother tongue or Hindi or any other language, those languages can create difficulties in the learning of foreign language, because his vocal cords, his speaking organs have developed according to the sounds of the mother tongue or the other language he has learned. And now we have to introduce the foreign language English to the child, which is totally different from the previous two languages. In his pronunciation, in his characteristics, in his sentence structure, and almost in all categories, English is totally different from the previous two languages. So it is a very difficult task to initiate this language. But we also know that if we want to teach any language to the student, we just have to create the environment of that particular language. ये हम देखते हैं कि छोटा बच्चा इनबॉर्न बेबी है, जब भी पैदा हुआ है तो वो अपनी माँ से जो है वो अपनी मदर टंग सीखता है। वो छोटा सा बच्चा कैसे जो है वो मदर टंग सीख जाता है, क्योंकि वो उसका जो आसपास का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सभी जो है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है वो बात करते हैं। तो वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उनसे जो है वो मदर टंग सीखता है। तो इसी जो है प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो हमने कोई भी लैंग्वेज अगर सिखानी है तो हमें वी शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल, मीन्स के वी विल हैव टू क्रिएट द conducive environment in the classroom or in the school premises where the child remains for 5 to 6 hours. And even if we want to teach this language perfectly to the students, then the environment of his home should also be like that. So here we will talk about the language rich classroom. How can we make our classroom rich in learning any particular language? So first of all we will discuss what is the meaning and concept of language rich classroom. A language rich classroom environment is one in which students are exposed deliberately and recurrently to high quality verbal input among peers and adults, and in which adult child verbal interactions are characterized by high level of responsiveness. मीन्स कि हमने अपने क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि टीचर और टॉट के बीच में जो वर्बल इंटरेक्शन है वो
उस लैंग्वेज में हो। ना केवल क्लासरूम में बल्कि पूरे स्कूल प्रीमिसेस में जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट बने कि जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट हैं वो ओनली उसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है वो इंटरेक्ट करें। If our goal is to create a language rich environment, student exposure to language should be meaningful, deliberate, repetitive, and engaging, meaning it directly involves the students as active participants. जब तक बच्चा एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक वो किसी भी लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा। As teachers, we constantly strive to create a classroom environment where children are exposed to high quality language in varying forms. After all, language acquisition and its use are at the core of all the reading, writing, and communication we expect of our students. So, this is the meaning and concept of language rich classroom. Now we will discuss what is the importance of language rich classroom. So from the following points it would be clear that what is the importance of a language rich classroom. If we are having a language rich classroom, then it would facilitate in the learning of the language. First, it will emphasize on children's acquisition of knowledge. If the classroom is language rich in language, then it will help the student to in the acquisition of that particular language. It will ensure the active participation of all the children. Next, it will provide the opportunities to use the language, because without using and without applying the language, we can't learn the language in its real sense. Students' exposition to language through different contexts and situations, because in a classroom the different situation will be created. There will remain different contexts and situations, and the students will be given the chance to use the language in its different contexts and situations. Language rich classroom provide opportunities to interact with each other. It is also helpful in imparting knowledge of words, grammar, and sounds. There are ample chances to use language in different contexts. And in language rich classroom, because the children will repeat the things, they will revise the things, and through this revision and through this repetition, his knowledge of that particular thing will become permanent. And language rich classroom creates the interest of students in language learning, because this is the fundamental principle of learning, that without interest we can't learn anything. So to create the interest of students in learning or language learning specifically, the environment should be like that. So this is the importance of the language rich classroom. Now we will discuss the different strategies or different techniques by which we can make our classroom rich in language learning. Means we just have to do some things in the classroom or in the school premises. With the help of those tools and techniques, we will help the students to learn the language easily. With the help of these techniques, the students will be able to use that particular language in its practical form. So first of all, read aloud every day. This is the first point. This means the teacher, when he is teaching in the classroom, he should read everything loudly.
and there will be a follow-up conversation after the reading about the topic the teacher has read. This will increase the vocabulary of the students. And the next point in this heading, the teacher, when he is reading something, he should say the students to write the unfamiliar words in their notebooks so that those words can be discussed later on and those words can be added in the active vocabulary of the student. To learn any language, we must have a sound and active vocabulary. Only then we will be able to learn any language, or only then we will be able to use that particular language in our conversation or in expressing ourselves. So this is the way by which we can add the vocabulary of the students. In spite of that, the teacher should kept many read aloud books in the library. So when the student will go in the library, they will find the different reading books and they will learn the different words from those books in the library. So this is the first point. Second है इसमें second point is to use the word walls. Word walls means हमारे स्कूल का जो कैंपस है, जो बिल्डिंग है, उसमें जो डिफरेंट जो लोकेशंस हैं उस पे हम जो है वो अलग अलग वर्ड्स जो है वो लिख के रखें, ताकि जब भी बच्चा स्कूल में आए तो उसको जो है वो एक नया वर्ड जो है वो सीखने को मिले। और ये रूटीन जो है वो हम हर दूसरे या तीसरे दिन जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो वर्ड लिखे हों वो किसी चार्ट के ऊपर हों, पेपर के ऊपर हों, सो दैट कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ some particular time those words can be removed off and the new words can be written on that place. तो इस तरह से नए वर्ड्स जो है वो हम हर एक जगह अपने स्कूल में, कैंपस में लगा सकते हैं। और इस ऐसा करने से बच्चा जो है वो डेली उसको नया वर्ड जो है वो सीखने को मिलेगा और इस तरह से दिस थिंग विल ऐड द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट और एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो हमें स्कूल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज यूज एंकर चार्ट्स। एंकर चार्ट्स मीन्स like word balls, anchor charts serve as a visual reference of concepts that have been taught, acting as a visible reminder of concepts, cues and our guidelines for learning. ये एंकर चार्ट में हम बच्चों को इस तरह से जो है वो कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोल सकते हैं कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, जब भी कोई आप नई चीज़ जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो जो भी आपको अच्छी उसमें चीज़ें लगती हैं, जो कोई अच्छा सेंटेंस है, कोई अच्छे वर्ड्स हैं, उनको आप जो है वो अपने किसी चार्ट के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख करके जो है वो कहीं भी वॉल के ऊपर जो है वो उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारे जो क्लासरूम की वॉल्स हैं वो एक तरह से जो है वो लैंग्वेज लर्निंग को जो है वो एनहांस करेंगी। इस तरह से वी कैन पेस्ट द डिफरेंट चार्ट्स हैविंग द डिफरेंट वर्ड्स विद different words having different characteristics like nouns, pronouns, verbs, adjectives, etc. Next is create a diverse classroom library. जो हमारा क्लासरूम है उसमें एक एक्टिव लाइब्रेरी भी जो है वो हमारे पास रहनी चाहिए। एक तो लाइब्रेरी है जो हमारे पास स्कूल में है, बट इन द क्लासरूम
वी मस्ट हैव अ सेपरेट लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में वी मस्ट हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, सम पिक्चर बुक्स, chapter books, magazines, graphic novels, tabloids, whatever you can find at varying levels. The more material students have available, the more likely they are to read, thereby increasing the amount of language they are exposed to. तो इस तरह से क्लासरूम में लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके हम बच्चों अपने क्लासरूम को रिच जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है पुट लैंग्वेज इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। इट मीन्स कि हम अपने जो हमारा स्कूल का प्रीमिसेस है उसमें हर एक अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस मीन्स कि हर एक जगह जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे हम जो है वो कोई ना कोई इंग्लिश में उस लैंग्वेज में पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई वर्ड्स लिखें, कोई कोटेशंस लिखें, कोई स्टेटमेंट्स लिखें। हर एक तरफ जो है वो इस तरह की चीज़ें हमें लिखी हुई जो है वो मिलें, ताकि बच्चा जहाँ भी नज़र दे उसे कुछ ना कुछ जो है वो हर एक कॉर्नर से जो है वो सीखने को मिले। आर नॉट ओनली क्लासरूम बट इन होल ऑफ द कैंपस, our entire school serve as a great example of students finding language in unexpected places. Some inspirational quotes should be painted all around. Students often stop to read the wording on the walls. ये बच्चों में एक टेंडेंसी रहती है कि जहाँ भी कुछ लिखा होगा वो उसको पढ़ने के लिए जो है वो जरूर रुकेंगे। तो इस तरह से जो है वो बच्चों हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो रिच बना सकते हैं। सिक्स्थ इज सर्च फॉर एसम लैंग्वेज व्हाइल रीडिंग। इसमें हम ये है कि बच्चा जब भी कोई चीज़ पढ़ रहा है, जब भी कोई बुक पढ़ रहा है, कोई जो है वो किसी भी तरह का जो है वो रीडिंग कर रहा है, तो हम ये बोलें कि आपको जो भी उस रीडिंग में जो भी एक अच्छा बहुत बढ़िया जो है वो वर्ड लगता है उसको आपने रीड करना है, एंड you just have to jot down that word in their notebooks. तो इस तरह से बच्चा जो है वो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट जो है वो लिखेगा, और उसको उसकी वर्डिंग को जो है वो हमने फिर एक वॉल के ऊपर जो है वो पेस्ट करना है। लाइक दिस एज यू आर लुकिंग इन द स्लाइड, आई जस्ट रोट समथिंग एसम, शी इज एज कूल एज द स्टार्स। इस तरह से कुछ भी जो है वो बच्चों को लिखने के लिए हम इंस्पायर कर सकते हैं। ये कुछ सिमिलीज हो सकती हैं, कुछ मेटाफर हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चा लिख सकता है। सेवंथ इज एनकरेज एसम लैंग्वेज इन राइटिंग। जिस तरह से बच्चे ने रीडिंग की है उस तरह से ही बच्चे को राइटिंग, जब बच्चा राइटिंग कर रहा है तो उसको ये एनकरेज करें कि यू जस्ट हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट, or write something, not only write something different but you have to write the things differently. कुछ इस तरह से लिखना है कि वो सबसे अलग हो, और मटेरियल भी अलग हो, और लिखने का जो तरीका है वो भी अलग हो। तो इस तरह का काम जो है that will act as greatest motivator in the classroom। मीन्स कि ऐसा लिखा हो कि students have really attempted to use language creatively in their writing just to have a great sentence they will evoke oohs and ahs from their classmates। कि उसके क्लासमेट जो हैं वो उसकी लिखी हुई लैंग्वेज को देख करके इतने अमेज्ड हो जाएं कि उनके मतलब मुंह से ऊ आहा जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स हैं वो निकले। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर जो है वो उस बच्चे के लिए होगा। नेक्स्ट है प्ले विद वर्ड्स। क्लासरूम में व्हेन वी आर फ्री वी कैन ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड गेम्स इन द क्लासरूम। दिस विल add not only add the vocabulary of the students but this will also create the interest of the student in language learning. Like we can organize word antakshari in the classroom. We can also organize different types of word games, like you have to say some noun words which are starting from the letter A, and
you have to say some adjective words which are starting from the word p. Yeah, you can say we can give some action verbs, and we will ask the students to express these verbs through the different symbols or signs, or some students will act to express those verbs, like there is a verb run, then the student will act like a runner. So with the help of these type of games, indoor games rather, we can add on the vocabulary of the child, and we can also create the interest. Next, find new ways to say old things. We should choose a weekly word that is overused and challenge, and we can say the students to find the synonym for that particular word. Means we just have to add the meaning to the word with which the students are already familiar. Some spicy word you can say, and we can ask the students to write some spicy words, and the students love to write these type of words, and we can make a chart of these type of words, and those charts can be placed in the classroom. With the help of this type of activity, we can create the language rich classroom. Next, engage your students in daily conversation. This is the duty of the teacher, that he should organize different type of conversation sessions in the classroom. क्योंकि कन्वर्सेशन जब तक क्लासरूम में प्रैक्टिकली टीचर जो है वो नहीं करेगा बच्चों के साथ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तब तक जो है वो उस लैंग्वेज को नहीं सीखा जा सकेगा. बच्चा शुरू में गलतियां करेगा, बट जब हम उसको बोलने का मौका देंगे, एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, तो धीरे धीरे थ्रू द continuous drill and practice, the time will come when the students will be able to speak in that particular language, and we just have to develop the confidence of the students, because speaking any language we need confidence. So without confidence, I think it will not be easy to speak in any particular language. So we have to organize different type of conversation session in the classroom. Speak like an adult. It means एक अध्यापक जो है ये सोचे कि ये तो छोटे बच्चे हैं, मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो बच्चों को समझ में नहीं आ रही हो, और इस तरह से वो उनको समझाने के लिए the teacher is using the different methods, or teacher is becoming bilingual. But this is the greatest you can say demerit, because the teacher should teach in the classroom in direct way. If he want to teach the English language, then the teacher should never use the word of any other language. He just have to speak in that particular language only. If he is becoming bilingual, if he is becoming using the words of other language, then the students can never learn that language, because इससे क्या होगा, बच्चा फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो उस भाषा को बोलने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वो पहले जो है वो अपनी मदर टंग में या हिंदी में सोचेगा, एंड आफ्टर दैट ही विल ट्राई टू ट्रांसलेट द थिंग्स इन इंग्लिश, एंड इन दिस वे ही विल नॉट बी एबल टू speak, or he will not be able to conversate in that language. So the teacher should
speak like an adult. The students will face some difficulties in the beginning, but later on, when an environment will be created in the classroom, then the things become easy for the students. And the last one is involve the parents. Language acquisition starts in the home, and most parents would love to learn how they can create a language rich environment for their students at home. So there is the need of conferences and phone calls from the teacher side, and the teacher should share with the parents what they can do at home to create a language rich environment for the children, because the children will only be able to learn the language when the same environment will be there in the home also. So in language learning, these were the some points which the teacher should keep in his mind while teaching any language in the classroom. So with the help of these tools and techniques, and we can also add some other techniques to make the environment we have to make the environment rich in the learning of any language. So this was the question about which we have discussed today, how we can make our classroom, our school rich for learning any language. Thank you.